Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel NCERT Studies. So today I am going to discuss with you exercise 1.2 of chapter real numbers. So here is first question. Express each number as a product of its prime factors. So this is easy question. So first is 140. हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो एज वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, सो वी डिवाइडेड बाय 2. तो हियर कम्स 70. सो नाउ दिस फर्दर कैन बी डिवाइडेड बाय 2. सो 35. सो नाउ इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5, 7 and now 7. So this can be written as 140 equals to 2 into 2 into 5 into 7. It means that 2 is square into 5 into 7, and this is the answer. Now second part is 156. So with the same process we can solve this. 156, since unit digit क्या है 6 है, so it can be divided by 2. So when we divide it by 2, 156 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 78. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे 39. सो नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 3. जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट हियर 13. And then now we divided by 13, so we get here 1. So the answer is 156 equals to 2 into 2 into 3 into 13. It means that 2 is square into 3 into 13 is the answer. Now third part is 3825. 3825. We add these numbers. 8 plus 3 11, 12 13 plus 5 18. तो सारे नंबर्स का सम 18 है, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3. जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1275. अगेन वी कैन डिवाइडेड बाय 3. सो हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट हियर 425. So 4 plus 2 6, 6 plus 5 11. So now it cannot be divided by 3. अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से. So then the answer will be 85. रिजल्ट क्या आएगा 85 आएगा. So now it can be further divided by 5. So we get here 17. So now we divide it by 17. So we get here 1. So 3825 equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So then the answer will be 3 square into 5 square into 17. So now next, fourth. Fourth part is 5005. So इसे भी हम सॉल्व करते हैं. सो 5005. सो एज वी नो दैट इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5. हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से. तो वी गेट हियर 1001. सो नाउ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, सो इट कैन बी नाउ डिवाइडेड बाय 7. सो वी गेट हियर 143. अभी हम 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो देन वी गेट 13. Now 13 subdivided, then we get 1. So we can write 5005 equals to 5 into 7 into 11 into 13, and this is the answer. Now fifth part, 7429.
7,429. So 7,429. So we can divide it by 17. So quotient आएगा 437. In next step we can divide it by 19. जब हम इसे 19 से divide करेंगे तो then we get 23. So now we divided by 23, so we get 1. So then the answer is 7,429 equals to 17 into 19 into 23, and this is the answer. Next question है, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. So here is first part. 26 and 91. So first we do the prime factorization. So 26 can be written as 2 into 13 and 91 can be written as 7 into 13. So now easily we can find it out HCF. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो जो भी नंबर यहाँ पर कॉमन हो वही क्या हो जाएगा? HCF. तो यहाँ पर 13 देखिए दोनों में कॉमन है, सो 13 विल बी द HCF. नाउ वी फाइंड द LCM. तो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है एज इट इज़ हम लिख देते हैं. सो वी राइट हियर 2 into 7 और जो भी नंबर कॉमन है उसे वी राइट 1 टाइम. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 into 7, 14 into 13, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट 182. अभी हमें वेरीफाई करना है कि क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा या नहीं होगा. फाइंड आउट करते हैं. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, HCF कितना था? 13 and LCM is 182. When we multiply HCF and LCM, then we get 2366. Okay, now we multiply numbers. So we write here product of numbers. Product of numbers. So numbers हैं 26 into 91. When we multiply, then we get 2366. Clear? हमें ये मिल गया 2366. तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया? Therefore, it is clear that LCM into HCF equals to product of numbers. Clear? ये क्लियर हो गया. So now second part, 510 and 92. Clear? 510 and 92. So first of all सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे. तो 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 510 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 3 into 5 into 17. Now we do the prime factorization of 92. Then we get 2 into 2 into 23. So again we find the HCF. So HCF is equals to, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कॉमन होता है, जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होगा. तो 2 इधर प्रेजेंट है, 2 इधर भी है. सो दिस विल बी द HCF. एंड इफ यू टॉक अबाउट LCM, तो LCM में जो कॉमन होता है वो 1 टाइम,
बाकी सभी एज इट इज हम नोट कर देते हैं. सो कॉमन इज 2, so we write one time, so this 2 comes here. Now 3 into 5 into 17 into 23. अभी हम इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो हमें मिलेगा 23,460. वी गेट हियर 23,460. सो नाउ अभी हमें वेरीफाई करना है कि LCM into HCF is equals to product of two numbers. So we find HCF into LCM. So HCF is 2 and LCM is 23,460. When we multiply this, then we get 46,920. 46,920. Okay, so now we do the product of numbers. So product of numbers is equals to 500 and multiply with 92. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे then we get 46,920. So hence it is clear that क्लियर हो गया कि LCM into HCF is equals to product of numbers. Product of numbers. Clear? Now, third is 336. 336. Next is 336 and 54. So first we do the prime factorization of 336. So 336 का जब हम prime factors करेंगे तो then we get 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. It means that we get here 2 is raised to 4 into 3 into 7. And now for 54 we get 2 into 3 into 3 into 3. It means that 2 into 3 cube. Now we have to find out HCF. So HCF क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर है, जो कॉमन होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे. अगर हम पावर्स में देखें तो यहाँ पे 2 रेज टू 1 है, यहाँ पे 2 रेज टू 4 है एंड 3 रेज टू 3 है, यहाँ पे 3 रेज टू 1 है. तो जो लोवेस्ट एक्सपोनेंट होगा वो हम लिख देंगे एंड दैट विल बी द HCF. So we write here 2 is raised to 1 into 3 is raised to 1. It means that 2 into 3, that means 6. And for LCM we write the maximum power, higher powers. So 2 raised to 4 into 3 cube into 7. And when we multiply all these we get 3024. Okay, हमें क्या मिल जाएगा 3024. Now we find the product of HCF and LCM. So it means that 6 into 3024. So when we multiply then we get 18,144. क्या मिल जाएगा हमें 18,144. Now we find the product of numbers. Product of numbers, that means 336 into 54. When we multiply these two, even then we get 18,144, and this shows that HCF into LCM is equals to product of numbers. Now next question, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Find the LCM
and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हियर इज फर्स्ट पार्ट 12, 15 and 21. So let's find it out. So 12 is equals to 12 can be written as 2 into 2 into 3, which means that 2 square into 3, and 15 can be written as 3 into 5, and 21 can be written as 3 into 7. So what will be HCF? So HCF ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। सो 3 इज कॉमन, सो HCF इज 3। एंड इफ यू टॉक अबाउट LCM, तो LCM में हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 स्क्वायर। सो वी राइट हियर 2 स्क्वायर इनटू 3 की हाईएस्ट पावर 3 रेज टू 1, दैट मीन्स 3, 5 into 7. So when we multiply all these, then we get 420, and this is the answer. Now let's do it. So second part, 17, 23 and 29. So 17, as we know that 17 is a prime number, so this can be written as 1 into 17. 23 is also a prime number, so this can be written as 1 into 23, and 29 also can be written as 1 into 29. So what will be HCF? So common factor क्या है, 1. So the answer HCF क्या हो जाएगा, 1. Now to find out LCM, so what will be the LCM? जो common होता है that we write one time, and जो common नहीं है then write as it is. जो common नहीं है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। when we multiply all these then we get 11,339. So now next part, 8, 9 and 25. So 8 can be written as 2 into 2 into 2. It means that 2 cube. 9 can be written as 3 into 3, and that means that 3 square. And 25 can be written as 5 into 5. It means that 5 square. So what will be HCF? So nothing is common, and if nothing is common is doesn't mean that nothing is common. Common क्या है, 1 is common, so we write HCF क्या हो जाएगा, 1. And LCM, तो LCM 2 cube into 3 square into 5 square. So it means that when we multiply this then we get 1800. हमें क्या मिल जाएगा, 1800, and this is the answer. Now fourth question, given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, find LCM of 306 and 657. सो हम इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो HCF क्या है, गिवन है 9, वी हैव टू फाइंड इट आउट। LCM, सो राइट LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 306 इंटू 657. So now LCM is equals to 306 into 657 upon 9. So when we solve this, this can be cancelled by 9, once 9, and 306 को जब हम cancel करेंगे तो 9 we get here 34. So when we multiply 657 and 34, then we get 22,338. Clear? And this is the answer. Now next question is that check whether 6 is raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. अगर 6 की पावर क्या है, n है,
तो क्या वो 0 के साथ एंड हो सकता है? 6 रेज टू n, तो if 6 रेज टू n ends with 0, किसके साथ ends होता है? ends with 0, then it must have 5 as a common, it must have 5 as a factor, 5 as a factor, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए भाई? 5 होना चाहिए। ओके, सो बट अगर हम यहाँ पर देखें 6 रेज टू n है, सो वी कैन राइट हियर 2 into 3 is raised to n। ओके, सो वी आर गेटिंग हियर कि 6 रेज टू n के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 3 होंगे, और यहाँ पर 5 फैक्टर नहीं है। 5 is not a factor of 5 is not a factor of 5 is not a factor of 6 raised to n, so hence यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? hence 6 raised to n can never end with the digit 0। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये composite numbers क्यों हैं, ये हमें explain करना है। तो 7 into 11 into 13 plus 13, so as we know that composite numbers have more than 2 factors। okay, कंपोजिट नंबर्स में क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो बस हमें वही प्रूफ करना है कि भाई इस नंबर पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो वी कैन टेक हियर कॉमन 13। हम यहाँ से क्या कर लेंगे? 13 हम कॉमन ले लेंगे, तो वी गेट हियर 7 into 11 plus 1, which means that we get 13 into 77 plus 1, so it means that 13 into 78। एंड हम फर्दर 13 को 70 सॉरी फर्दर विथ 78 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वी कैन राइट 13 इंटू 6। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन कितने फैक्टर्स हैं? जो भी हमें यानी कि गिवन एक्सप्रेशन हैज़, सो गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं भाई। ओके, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। सो नाउ नेक्स्ट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, so we can take here common 5। जब हम कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, so this further can be written as 5 into 1008 plus 1, so it means that 5 into 1009, इसमें भी क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, सो गिवन एक्सप्रेशन has more than 2 factors। so it is a composite number। तो इस वजह से कौन सा नंबर है? composite number। now next question, there is a circular path around a sports field,
Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? So to solve this type of question, we find the LCM. Okay, so first we find the LCM. So we find the LCM. So 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 into 3 into 3. It means that 2 into 3 square and then is 12. So it can be written as 2 into 2 into 3. That means 2 square into 3. So what will be its LCM? So LCM, we write the maximum powers. So we write here 2 square into 3 square. It means that 4 into 9 and that means 36. Okay, so they will meet together after 36 minutes. कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे? After 36 minutes. Okay, so thank you everyone and stay tuned.